Guys, this is Mahendra. Welcome to my YouTube channel Mahendra Technical 948. So today we'll talk about the expressjs and node.js. So आज मैं आपको बहुत इनिशियल expressjs का और node.js का राउटर का पाथ बताने वाला हूँ, like how we can do the routing. So start करते हैं वेरी स्मॉल डिस्कशन से. So if suppose मैंने एक workout.js की फाइल बनाई है यहाँ पर, तो अगर हम एक्सप्रेस यूज करते हैं, इसमें यूज क्या करते हैं, हमें यूज करनी ही पड़ेगी एक्सप्रेस विथ नोट. सो व्हाट वी राइट हियर, कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस. मतलब हम एक्सप्रेस को यूज कर रहे हैं तो पहले हम उसको क्या करेंगे, रिक्वायर कर लेंगे. एंड इफ आई विल माउस ओवर ऑन रिक्वायर, देन यू कैन सी हियर इट्स काइंड ऑफ ए स्ट्रिंग, आईडी स्ट्रिंग और एनी, राइट. एंड फिर हम क्या करेंगे, अगर हमें राउटर है, राउटर अगर मैं यहाँ पर डालना है तो व्हाट विल डू हियर, कॉन्स्ट राउटर इक्वल्स टू एक्सप्रेस डॉट राउटर. फाइन. First we will require the express, then we will just create a const router equals to express dot router. Fine. राउटर एक हम वेरिएबल बना लेंगे. आप राउटर नहीं लिखे, कुछ भी नाम लिख सकते हैं, const m router, x router or maybe, but router is a generic name because we are just expressing the router here. Okay, so we'll write here const router equals to express dot router. Fine. Now if we will get all workouts, then what we need to do here, हम यहाँ पे लिखेंगे राउटर डॉट गेट स्लैश मीन्स रूट पे रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स एंड विल राइट अ फैटी एरो फंक्शन, देन रिस्पॉन्स डॉट जेसन मैसेज गेट ऑल वर्कआउट्स. ओके, दिस इज द राउटिंग which we are writing for the get all workouts. So what we will write here, get router dot get slash request dot response and response dot json में हमें क्या मिलेगा, get all workouts. अब कोई कहता है मुझे एक सिंगल यूनिक वर्कआउट चाहिए, वी डोंट वांट टू गेट ऑल वर्कआउट्स, सो व्हाट विल डू हियर, राउटर डॉट गेट, वी विल राइट हियर स्लैश कॉलन आईडी, देन रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स, देन व्हाट इन रिस्पॉन्स वी विल राइट हियर रिस्पॉन्स डॉट जेसन गेट अ सिंगल वर्कआउट. फाइन. नाउ अगर हमें कोई वर्कआउट पोस्ट करना है, फाइन, तो हम क्या करेंगे, राउटर डॉट पोस्ट रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, रेस्पॉन्स डॉट जेसन में क्या आएगा, मैसेज एक, इसमें एक मैसेज हम चेंज कर सकते हैं. What we have done here, we have post, right, post workout, just write post workout. Fine. So ये डेटा जाके यहाँ पे सर्वर, आपके जो सर्वर है, जो एपीआई है जो हमने बनाई है पोस्ट के लिए, वहां पर ये डेटा चला जाएगा. तो दिस इज अ सिंपल राउटिंग फाइल आई हैव क्रिएटेड हियर. विल गो नेक्स्ट वन बाय वन and please keep watching my videos for more and more coding practice. And please like and subscribe. Thank you so much, guys.